welcoming class 9 in the offline class and some of your friends who are not present in the e-learning class of St. Michael's Academy. And from today in the crash course, I will start the revision and taking your doubts starting from the very first chapter, that is the real number. And there are 2 or 3 very important area in that one. That is the rationalizations, exponent and representation of irrational number on number line. So we'll take these 3 topics. Since today you have not come prepared with your geometry box, so I will take the remaining 2 topics, rationalizations and exponent. Now, this is the very first topic which you have studied during pandemic, rationalization. Can anyone tell me what you understand by this term rationalization? Yes, Aditya. Sir, breaking down of denominator, which is an irrational number, into a rational number is known as rationalization. Not breaking down, converting. Converting in equal expression. Converting the denominator which are irrational into rational. Okay. So directly I am going to take some questions. Of exercise 1F. Exercise 1F. Question number 3rd of question number 4. Suppose you are given root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2 is equal to a plus b root 6. Then here you have to find the value of a and b. Rationalization का क्या ट्रिक होता है बच्चों? If it is binomial or trinomial, then you have to multiply and divide with the same digit but changing the sign. अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ये? Root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 3. इसी डिजिट से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि और माइनस की जगह यहाँ क्या करना है बच्चों? हो जाएगा into root 3 plus root 2 upon root 3 plus root 2. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. But we have convenient because these both denominator are same, a plus b and a plus b. That is stand for a plus b whole square. And here a minus b into a plus b stand for a square minus b square. Okay. A plus b whole square is equal to a square, root 3 square is equal to 3, plus b square, root 3 square is equal to plus 2ab, 2 into root 3 into root 2, 2 root 6. Root 6, that's equal to 3 minus 2, that's equal to 5 plus 2 root 6, 1 is not needed to write. What is the value of this one? 5 plus 2 root 6 is equal to A plus B. a plus b root 6. So I can write here now 5 plus 2 root 6 is equal to a plus b root 6. Okay. Here which means that a stand for 5 and b root 6 stand for 2 root 6. So here you will get the answer of a is equal to 5. B root 6 is equal to 2 root 6. Root 6 cancel, so B is equal to 2. So what is your answer? A is equal to 5 and B is equal to 2. Got it? So please practice at least 2 to 3 questions of this type from this R.S. Agrawal book or NCERT. Now, after that, you will solve 1 or 2 questions from question number 7 also. I am going to take directly from question number 11 to question number 17. I am going to take question number 14 for you. Question number 14. You have given x is equal to 5 minus
root under 21 upon 2. Then you have to find the value of pi x plus 1 upon x. ये चीज ध्यान दोगे बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दिया है. Whatever you have given the value of x, x का जो भी वैल्यू दिया रहेगा, suppose you have x is given √3 minus √2, आप देखिएगा 1 upon x का वैल्यू आएगा √3 और √2 रहेगा, लेकिन माइनस साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस. इसमें भी 1 upon x का आप साइन लेंगे, देखिए ये माइनस साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में. ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ 1 upon x लिखेंगे ऐसे, इसको क्या लिखेंगे? 1 upon 5 minus √21 upon 2. तो ये 2 पर चला जाएगा. Yes, sir. इसको नहीं समझ में आया ये चीज. हाँ बताओ. अब यहाँ देखो, सपोज यू हैव गिवन x is equal to 3 upon 4. अब यहाँ 1 upon x लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? 1 upon 3 upon 4 is equal to 1 divided by 3 upon 4 is equal to 1 into 4 upon 3. अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट ले रहा हूं बच्चों. यहाँ 4 था ना, 4 कहाँ चला गया? न्यूमरेटर में. और 3 कहाँ चला गया? 2 कहाँ चला जाएगा? और 5 minus √21 कहाँ चला जाएगा? अभी क्लियर हो गया? चलो. So that is equal to 2 minus root under 5 upon 21. इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? साइन बदल के 5 plus root under 21. ये हो जाएगा 2 into 5 square minus, हो गया? फाइव फाइव जा 25. रूट 21 हो गया. 2 into 5 upon 4. 4. 2 to जा 4. So here 1 upon x is equal to 5 plus root under 21 upon 2. अब यहाँ देखिए x कितना था? 5 minus root 21 upon 2. 1 upon x क्या आ गया? केवल ये साइन हमारा चेंज हो गया. हमको वैल्यू कितना निकालना है? x plus 1. Now x plus 1 upon x. X is equal to 5 minus root under 21 upon 2 plus 5 plus root under 21 upon 2. एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया. 5 minus root under 21 plus 5 plus root under 21. ये रूट कैंसिल हो गया. 10 upon 2 that is equal to 5 and this is your answer. So again I suggest to solve at least 3 to 4 questions from question number 11 to question number 16 of RS Agrawal. Okay. Now directly I am coming to the topic exponent. अब थोड़ा मेरा गियर चेंज होगा बच्चों, ठीक है ना? थर्ड गियर और फोर्थ गियर में हम लोग पढ़ाई करेंगे, बहुत लोग पढ़ाई नहीं करेंगे. अब देखिए, here I am going to explain you the basic rules of exponent. There are 8 basic rules. जो बच्चे लिख रहे हैं थोड़ा सा इधर ध्यान दे, लिखना बंद करके प्लीज, because this is the basic concept of exponent. Suppose I write here, इसको कैसे पढ़ते हैं? Anyone raise your hand. a to the power x. A to the power x. ठीक है. Partly you are correct. Totally a raised to the power x. A raised to the power x. A is called the base. A को हम लोग बोलेंगे base और इसको हम लोग बोलेंगे पावर या एक्सपोनेंट. नोन एज पावर और एक्सपोनेंट. और इसको बोलेंगे a is raised to the power x. ठीक है. There are 8 rules.
Now, rule number 1. Rule number 1. If base are same, then you need to add the power. Exponent. इसको फेविक्विक कर ला. Bring feviquick. Girls are using lipstick now. I will put feviquick in house. Lipstick. In our lips. X raised to the power a into x raised to the power b. Base is same, then in this case we have to add the power or exponent. When base is same and we have to undergo the division process, then you have to subtract the power. When we have given power to the power, then we need to multiply. Fourth is very important. Any number raised to the power 0 is equal to 1. Fifth one, if there is negative exponent with the numerator, that will become positive in the place of denominator. Likewise, just the converse of this one. If there is negative exponent in the denominator, in numerator it becomes positive. When you combine this 5 and 6, and you have given x to the upon y to the power minus m, it will replace numerator and denominator, change its place. That becomes y upon x to the power positive m. And the last rule, if the exponent is same, and base are different. Suppose x to the power a into y to the power a. In this case, you have to multiply the base and combine to the power a. X into y to the power a. So these are the 8 basics rule that will help you to solve the questions of exponent. What I will suggest you, those who have not yet practiced this one, from question number 1 to question number 7, there are very simple questions based upon individual rules of this one. Okay, now मैं question explain करता हूँ. Question number 1 of question number 8. Exercise कौन सा है बच्चों? एक मिनट. Question 1, exercise 1G. Exercise 1G. Question number 1 of question number 8. You have given 4 upon 216 to the power minus 2 upon 3 plus 1 upon 256 raised to the power कितना बच्चों? Minus 3 upon 4 plus 2 upon 243 कितना दिया है बच्चों? raised to the power minus 1 upon 5. Please check the question whether I have written correctly or not. देखो बच्चों, when you have given this type of questions, the power, especially the number which is written in the denominator, is a hint for you. ये जो संख्या है ना 3, 4 और 5, ये आपके लिए hints है. क्या hints है? If that the base number can be raised to the power 3 of any particular number. Likewise, this 256 can be represented as any base raised to the power 4 and also 243. Okay. अब आएंगे इस पर 4 upon, इसको सॉल्व कीजिएगा तो शायद ये 6 का आएगा. 6 का 36 6 का 216. आप इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लोगे. हो जाएगा हमारा 6 to the power 3
इंटू -2/3 हो गया। प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 16 या 256 होता है। 16 square, yes. तो 4 का रेज टू द पावर 4 हो गया 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर और अनदर 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा बच्चों तो ऐसे करना, देखो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा, ऐसा ही है। 2 6 जा 2 4 जा, 2 से करोगे 32, 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे। अब ये जोड़ा बना लो अपना, तो 4 क्या हो गया हमारा? Yes, sir. Yes. तो ये हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर 4 इंटू -3/4 हो गया। प्लस 2/, ये 3 का आएगा, आपको दिखेगा क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 हो जाएगा 3 टू द पावर 4 दोनों में 81 हुआ, हो जाएगा 3 टू द पावर 5 इंटू -1/5। अब देखिए रूल नंबर 3, इन ईच वन यू हैव गिवन पावर टू द पावर, तो सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बच्चों। अब ये हो जाएगा हमारा 4 टू द पावर 3 और 3 कैंसिल हो गया, 6 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -3 प्लस 2 टू द पावर 3 टू द पावर -1। अब देखो रूल नंबर 6, if you have given negative exponent in the denominator, that negative exponent will be converted as साक्षी। केवल आप ही का नाम मैं जानता हूं इस क्लास, बोलिए साक्षी। The negative exponent in the denominator will convert as in the place of numerator। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट आप यहां देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको अपॉन 1 नहीं सकता ऐसे। नेगेटिव एक्सपोनेंट इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर विल कन्वर्ट एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट इन द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। जोर से बोलो। चलिए ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इंटू 4 क्यूब्ड प्लस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। तो 6 के 36, 36 चौका 144, 36 गुना 72 गुना 144, 4 चौका 16 चौका 64 और 6 4 10 4 14, 6 और 1 7 और 4 11, 1 और 1 2। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए बच्चों? Yes, sir. Now please note it down and solve these type of questions at least 3 to 4 questions. Tomorrow I will take representation of irrational number and after that I will take polynomial topic. God bless you. Please.